Today we'll study about fertilization. Now, fertilization is a process by which, or it can be defined as the process of fusion of a haploid male gamete and a haploid female gamete. Haploid male gamete ki hai? Sperm. Haploid seta. And haploid female gamete, that means ovum. Fertilization is a process of fusion of the haploid male gamete and a haploid female gamete to form a diploid zygote. गोटे haploid male and गोटे haploid female gamete fuse होइकी गोटे diploid zygote formation करती. This is the process of fertilization. है ना? Now, fertilization जितने भी अच्छी ताको हमें जो broadly divide करिबा. Fertilization can be divided into two types. One is external fertilization. Out है internal fertilization. What is the difference between external fertilization and internal fertilization? External fertilization is where the fertilization occurs outside the body of an organism. गोटे organism body भितरे हुए नहीं fertilization टा जितने बाहर है. That means the female lays the eggs and then the sperms come and fertilize them. बाहर बॉडी बाहर जितने फर्टिलाइजेशन होची ताकू आमे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहबा. एग्जांपल जदि देखियो एग्जांपल हला फिश फ्रॉग एमान कोन करते फीमेल माने पानी रे अंडा दे दियंती तापरे मेल फिश आसिकी बा मेल फ्रॉग रो स्पर्म से फर्टिलाइज हुए. सो द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? Internal fertilization is the fertilization that occurs inside the body of an organism. For example, in human beings. Human beings record where the fertilization takes place inside the female reproductive tract, inside the fallopian tube, ampulla region. The female reproductive system the ampulla of the fallopian tube is the site of fertilization. So, jo case re fertilization ta बॉडी भितरे होची ताकू आमे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहबा. एग्जांपल हला ह्यूमन मोस्ट ऑफ द मैमल्स जेतक इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुए. तापर आ गोटे वे भी अच्छे डिवाइड करिया पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, दैट इज मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन आउट हला पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन. एज पर द वर्ड और द नेम सजेस्ट, मोनो माने हला सिंगल, स्पर्मिक माने गोटे स्पर्म जेते बेले or when one sperm enters into the egg, गोटे स्पर्म जितले एंटर करची ताको आमे मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहबा. जेते बेले बहुत गुडे स्पर्म्स एंटर करि जाय फीमेल बॉडी फीमेल रो ओवम को और द फीमेल गैमेट को और द एग को ताको आमे पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहबा. जनरली mammals case रे it is monospermic fertilization. Polyspermic fertilization we can find in some reptiles, birds. एथि पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन हुए. बुझिएला. सो फर्टिलाइजेशन माने कौन? इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स विच आर हैप्लॉइड टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल where the fertilization takes place outside the organism. Internal when the fertilization takes place inside the organism. If one sperm enters into the egg, it is called as monospermic fertilization. If more than one enters into the egg, more than one sperm enters into the egg, it is called as polyspermic fertilization. बुझिएला. Now since tomorrow achi will be studying the fertilization in humans. Now fertilization in humans is internal. जेमती कहली internal हुए because in case of human beings female रो reproductive tract रो fallopian tube रो मझी part, that is the ampulla region, सेठी fertilization हुए. Now during the process of copulation or sexual intercourse, the male discharges the semen into the vagina of the female and this is called as insemination. When the semen of the male enters into the female vagina, तापरे कौन हुए? The sperms they move. Female body को enter कर साला परे the sperms they move. कहिछि the sperms have their capacitation, that is their ability to go up to the ovum and fertilize them. तो किंतु जेहेतु the sperms are a separate organism
or they are separate individual or they are a foreign particle. सो कौन हुए ना फीमेल बॉडी भितर भी बहुत गुड़े एसिडिक सिक्रीशंस हुए जहाँद्वारा कि से स्पर्म्स गुड़ाक बिफोर दे रीच अप टू दी ओवम दे डाए सम ऑफ देम डाए. सो एक्चुअली कौन हुए ना गोटे सीमेन तुमको आगु पढ़ाई स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाला बेले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाला बेले दैट अ सिंगल इजैकुलेशन कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. Approximately 300 millions of sperms are present in a single ejaculation. But out of those millions of sperms, only a few hundred are capable of going up to the ovum. जो स्पर्म मानकर कैपेसिटेशन अधिका थिबो जो मानकर फर्टिलाइजिंग पावर अधिका थिबो से स्पर्म्स माने ही निजको रेजिस्ट करिकी से एसिडिक एनवायरनमेंट रे इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनसाइड द वाजिना तार एसिडिक सिक्रेशंस रु निजको रक्षा करिकी से माने एक पर्यंत पहुंची पारंते. तापरे कोन हुए ना द सर्वाइवल और द स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैन remain alive for maximum 72 hours, that is 3 days. 3 दिन पर्यंत maximum गोटे रु 3 दिन भितरे पर्यंत से माने maximum बंची पारिबे. The sperms can live or be alive inside the female reproductive tract. Similarly ovum टा menstrual cycle रे पढ़ीचे तम मान को कुहाई छि कि ovulation day, the 14th day रे ovulation हे साला परे the ओवम तो न था. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte स्टेज रे से मैक्सिमम 24 आवर्स पर्यंत से अलाइव कि रही पारिबो. जदि 24 आवर्स भितर द स्पर्म फर्टिलाइजेस इट, द oogenesis इज कंप्लीटेड, द सेकेंडरी oocyte बिकम्स ओवम एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए. किंतु जदि 24 घंटा भितर द ओवम or the secondary oocyte is not fertilized, then it gets destroyed and menstrual cycle through रे मेंस periodic cycle रे से pass on हो जाए बा नष्ट होके बाहर जाए. So this is the overall the fertilization in human briefing. Next video रे will study the entire process of how the sperm penetrates into the wall of the ovum और दी सेकेंडरी oocyte, बिकज अब तुम्हें जान सेकेंडरी जो oocyte अच्छी ता चारिपटे गोटे जोना पेलुसिडा थाए ता बाहर कोरोना रेडियाटा अच्छी. तो एते सब को क्रॉस करिकी स्पर्मटा केमिति एंटर करुची, एंटर कर सारा पर केमिति केवल न्यूक्लियस को से छाड़ुची एंड द न्यूक्लियस के दीटाक न्यूक्लियस दी जनकर क्रोमोसोम्स केमिति मिक्स करिकी दीटा हाप्लॉइड बा स्पर्म एंड ओवम रो न्यूक्लियस रे थिबा क्रोमोसोम्स गुड़ाक मिक्स करिकी गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म क्रिएट करूचंती और ए नुआ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द जाइगोट इज क्रिएटेड. दैट विल स्टडी इन द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो.